Okay, Assalamu alaikum. Today the topic of discussion is properties of the production set, which we start in my previous lecture. So today we have continuation of this topic. Now we have discussed in my previous lecture. Okay, for example, if you have a four-dimensional or the four-quadrant system, so in case of decreasing returns, production set will be like this shape. And in case of increasing returns, production set will be like this shape. Increasing returns. Okay. So now today we are focusing towards some important properties related to the production set. For example, number one important property is free disposal. What does it mean by the free disposal? Free disposal means that if firm can produce certain level of output by utilizing 2 units of inputs, so it is not necessary or it is useless same level of output you produce by utilizing 3 units of output. So remaining extra unit of output can be easily disposed of by reducing the number of unit of output. How you will explain this one? For example, y and y dash belongs to production set, belong to production set, and we assume y dash is less efficient than y. What does it mean? In terms of utilization of inputs, you have best example of the services sector. When you have a national bank or you have the example of the national bank, more service provider are producing or providing the same level of services, okay, as compared to the private sector. Private sector, for example, they are providing the same level of services, but utilization of servicemen are less than as compared to the public sector. So we can compare that in term of, for example, it is the case of the private sector, it is the case of the public sector. The public sector is least efficient in term of utilization of inputs. What does it mean? In y dash we utilize more inputs to produce same level of output. To produce same level of output that can be produced by
production plan y. So it means कि we can say that कि y is more efficient as compared to y dash. अब how you will represent graphically? Y1. Y dash. Okay, now you can compare it. This is y1 and this is y. So y1 dash is less than y1 double dash because it is going to represent input. Clear? So that input is less than this amount of input. So it means that we are producing the same level of output. It is going to represent output y2. So now that production plan has y2 output and minus y1 dash input. Clear? ये लिख सकता हूं ना, y2 is the output and y1 is input. And now here, if you compare this one, so it belongs to what? Again y2 and minus y1 double dash. And y1 double dash in term of magnitude is greater than y1 dash. So you are producing the same level of output by utilizing more unit of inputs. So you can discard the extra unit of input by reducing the same unit of output. It is the property of free disposal. क्लियर? कि जो काम आप कम यूनिट से कर सकते हो वो आप एक्स्ट्रा यूनिट से कर रहे हो, तो इट मींस कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट यू कैन इजीली डिस्पोज ऑफ. Clear? So every production plan should have, or the production set should have this property which is called free disposal. Clear? So you can compare private and the public sector. Either it is the service providing sector or it is the commodity producing sector. Clear? It is efficiency, yes. So that's why y is more efficient as compared to y dash. It is inefficient it is efficient. Now the next one is
मैं ये कह रहा था कि इन केस ऑफ द पब्लिक सेक्टर नॉर्मली वी आर given or providing the same level of output which is provided by, let's say we assume, by private sector, but private sector utilizes less unit of inputs either in term of labor, serviceman and whatever, ठीक है, और public sector utilizes more unit of inputs. So that's why the public sector is inefficient as compared to the private sector. We can compare sake of example, ठीक है. So it means कि extra unit of input can be disposed of, ठीक है, rejected by reducing the same unit of services or output. So it is the case of free disposal. So every efficient production plan or production set should hold this property, free disposal. Clear? Ab now, irreversibility. If y1 and y2 belongs to production set, then it is not possible okay, it is not possible. If y1 is input, you are producing y2 level of output, and that y2 level of, and this is your the part of the production plan which belongs to production set, clear, which is feasible and efficient, then it is not possible to reverse back that input into output. Clear? So it is not possible, right? So it means it will not belongs to the production plan. So how you will represent graphically this one? Okay, so irreversibility is not possible. Positive, clear, means input can be reverted back in the original form,
Clear? So now you are producing 0 unit of y or the negative y, so it is not possible. If this one is negative y2, so it is not possible. Irreversibility is not possible in case of the production. Once input has been exhausted completely, so you cannot revert back that input into its original form. एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो कि किसी भी प्रोडक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल you can revert back that raw material into its original position. So it is not possible, na? Exactly. क्योंकि we assume that in case of efficiency, we completely exhaust our all inputs to convert into output or final utilization of output. A labor maybe, is it possible कि your after completion of your degree it can be reverted back? It is not possible. What once input you get, जो भी आपके अंदर input आ चुकी है, either in term of knowledge or whatever, it cannot be reverted back until and unless you have any exceptional case कि अगर आप कोई mentally एक कोई शख्स retarded हो जाए, whatever, otherwise it cannot be reverted back. Clear? So now next is okay. Non increasing returns to scale non decreasing returns to scale if y belongs to production set implies that alpha y also belongs to production set when
alpha greater than 0 and less than 1. Clear? अब देखो, when we multiply or scale down, for example, the value of alpha is 0.5, which lies between 0 and 1. Clear? When we multiply this production plan by 0.5, so it will be go down or reduced as compared to this one. Clear? So if still, and this is your complete production plan. So if y belongs to production set, so alpha y also belongs to production set. So it means that it is non-increasing returns to scale when you will have this kind of technology which is convex, or you will have this shape of the production set. But in case of this one, for example, we select this is y, which belongs to again minus y1, y2. Now scale down, select this one, alpha y. So this alpha y does not belongs to y. So non-increasing returns to scale property will be satisfied if your technology or the production set will be convex. Not in this case. Non-increasing returns to scale. क्यों? देखो, alpha की value never be equal to 1. It value will be equal to 0.9, 0.8, 0.5, whatever, and will be greater than 0. Clear? So अगर let's say मैं आपके पास y equal to 2 है, and when I multiply by alpha y and it is 0.5 multiplied by 2, so what happened? This value will be reduced as compared to this one. Clear? If this condition is hold here, यानी मैं इस तरह स्केल कर रहा हूं इनपुट्स को. क्लियर? व्हेन आई मल्टीप्लाई इनपुट्स बाय 0.5, सो दिस प्रोडक्शन प्लान विल रिड्यूस डाउन, ये नीचे की तरफ आएगा. तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा वाई लेस देन वाई, ऐसे ही है. Alpha y is less than y. Why? Because you have the value of alpha is less than 1 and greater than 0. Clear? So what does it means? इसको मैं यूं लिख सकता हूं. For example, y equal to, let's say यहां पे आपके पास labor and capital, and this labor and capital, let's say कि we have one labor and one capital. Any production plan. Clear? One labor and one capital. Case of sewing machine and whatever, one tailor and one machine stitching के लिए. Clear? And what happened if we scale कि now we multiply by according to this value, कि हम labor और capital को change करते हैं by this ratio. How much? Now 0.5 L and 0.5 K. So what does it means? This value will go down. It will be 1 over 2 and similarly 1 over 2. Am I right? So this is non-increasing returns to scale. So non-increasing returns to scale will satisfy in this condition when you will have this kind of the production set, that is called convex technology. In case of in this condition, you will not satisfy the property of the non-increasing returns to scale. So recall this one. We assume that feasible choice set should be convex.
Clear? We assume that property. So here again, so our the production set should be in nature of convex technology, not non-convex technology. Clear? So otherwise you won't satisfy this property. Non-increasing returns to scale. Now look at this one, non-decreasing returns to scale. Non-decreasing returns to scale, what does it mean? कि the value of alpha, clear, greater than equal to 1. Clear? Greater than equal to 1. Same kind of thing, but the value of alpha will be greater than equal to 1. Yani you will change input, labor and capital either by the same proportion or greater than that proportion. Clear? So should the value of a scale equal to 1 or greater than 1? So how you can write it? If y belongs to y implies, इसका मतलब होता है implies that alpha y should also belongs to y when alpha greater than equal to 1. So look at this one. देखो, always I am going to connect the scale of line with origin, starting from the origin. Scale, either scale down or scale up. For example, this is y belongs to again y1 plus y2. So in case of increasing returns to scale, this will be alpha y, either equal to this one if it is 1 or greater than 1. Clear? Right? If the value of alpha is 1, so you will have on the same point. ठीक है? If it is greater than 1, so you will increase upward. Clear? So what happened? So now this alpha does not belongs to y. If it is belongs to y, so in this case, non-decreasing returns to scale does not satisfy. Clear? Here it is going to satisfy, but here you don't have these, yani you don't have property of the decreasing, non-decreasing returns to scale in case of the convex technology. What happened? Non-decreasing returns to scale will satisfy when your production plan is like this one. Non-convex, not concave, non-convex. It is convex, it is non-convex. So now select this one, y, again minus y1 plus y2 and clear? Alpha y, it is belongs to y and this is belongs to y. Yes. नहीं, मैं टर्न नहीं कर रहा, टर्न नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा वो हो गया है. अगर मैं तुम इसको स्ट्रेट भी करो, यस स्ट्रेट है तब भी है. नाउ यू विल हैव दिस वन.
you will draw a straight line from the origin. In case of non-decreasing returns to scale, or in case of non-increasing returns, decreasing returns to or increasing returns to scale. Clear? And same kind of thing you will have the constant returns to scale. Okay. Okay. Yes, constant returns to scale. Yes. In case of the constant returns to scale, this is your production plan. This is Y1, Y2. For example, you will have here Y. This is minus Y1 plus Y2 to Y. Value of alpha either greater than equal to 0. Clear? It means it may be greater than 1 and something else, or this value, for example, it may be 1.5, or this value it may be 0.5. Yani you can change your input by ratio of 1.5 या 1.5% or by 0.5%. You can change labor and capital both. Clear? कि आप लेबर को या तो 50% लेबर आप इंक्रीज करो और 50% कैपिटल इंक्रीज करो, और यू मे पॉसिबल कि you increase 150% labor and 150% capital. It is the meaning of alpha 1.5, alpha 0.5. ठीक है कि now I am going to replace my labor by increasing 50% more labor, utilizing more labor यानी 0.5. तो अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो what does it means कि I will go down, ठीक है, नीचे आ जाएगा, यानी 50% कम लेबर यूटिलाइज कर रहा हूं, और here I am going to utilize 50% more labor. Clear? What does it means कि let's say 2 labor and 2 capital in any y. मेरे पास 2 लेबर है, नाउ आई हैव 2 कैपिटल एंड 2 लेबर. व्हाट डज इट मींस? बाय यूटिलाइजिंग सम लेस यूनिट ऑफ लेबर 0.5. तो व्हाट इट इज मींस के 1 लेबर एंड 1 कैपिटल. एम आई राइट? और आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 1.5 लेट्स से, तो इट मींस के इसको इंक्रीज कर देता हूं, लेट्स से, तो यानी 3 और 3 लेबर एंड 3 कैपिटल. क्लियर? राइट? सो 3 labor
and 3 capital. Okay, you got my point. Argument is here, for example, it is y dash, it is y double dash, and this is y. So y dash, y double dash, all production plans should belongs to production set in case of constant returns to scale. So what should be the shape of production set? The shape of production set should be like this one. Now it is what? This is y dash, am I right? And this one is y double dash. Clear? नहीं वैरी कर सकती है, मैंने तुम्हें ये कहा है कि नाउ दिस रेंज इज विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. Clear? In case of 0, it means कि inaction is possible. We have discussed previously कि shutdown is possible in case of production. Clear? Shutdown is possible. We discussed previously कि in any case the shutdown is possible. Depends, we discussed कि either you will have the sunk cost or the fixed cost, but the shutdown is possible. Clear? Any question? कुछ पूछना है पूछ लें, then we move forward. Startup cost, if sometime it may be a sunk cost or sometime it may you can recover it, depends on your production strategy or the nature of the production. Exactly, exactly, depends. Clear? Okay, now the last one is convexity. Convexity. For example, y and y dash belongs to production plan. Okay. And alpha belongs to 0 and 1. Meaning its value lie between 0 and 1. 0.5, 0.9, whatever. Alpha y plus 1 minus alpha y dash also belongs to y.
This is y, this is y dash. Now, belongs to y. Clear? So now the convexity is here. So technology should be convex. Okay. Now non-decreasing returns to scale in case of fixed cost. Fixed cost. So it is y. Again, draw a line from origin and extend this one. Sorry, getting just a minute. Clear? This is y. And this one is alpha y. So in case of the fixed cost, y belongs to y implies that alpha y also belongs to y. Again, the value of alpha greater than and equal to 1. Non-decreasing returns to scale. Now similarly,
increasing returns to scale in case of fixed cost नॉन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. लेट मी करेक्ट इट. जरा इसको मैं सही कर दूं. ये मैंने नॉन डिक्रीजिंग का ये बनेगा, इसको जरा सही कर दूं जरा. नॉन डिक्रीजिंग, सॉरी, नॉन डिक्रीजिंग मींस दिस वन. ऐसे ही था. क्लियर? यस. फिक्स कॉस्ट का केस दिस वन. इसको करेक्ट कर लिएगा काइंडली. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. This is this one and extend it. Clear? This one. It is for example y and this one is alpha y. Now, non-decreasing returns to scale. Non-increasing returns to scale, you will have this one. It is fixed cost and this one is y. ये थोड़ा सा इसको कर्वेचर किएगा ताकि अंदर आएगा, क्योंकि क्रॉस होकर ये अंदर ही आएगा ये. ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करने में वो हो रहा है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग. तो नाउ दिस वन इज अल्फा वाई. सो इन केस ऑफ द फिक्स कॉस्ट, नॉन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नॉन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बोथ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई. Alpha y and y both belongs to y. Okay, now we are moving towards the production function and the marginal rate of technical substitution. कि why it is diminished, कि वो क्यों decline कर रहा होता है, what are the factor behind कि you will have the diminishing marginal rate of technical substitution. Clear? मिटा दूं? Yes. Okay. So देखो, first of all just recall these properties. We started के now no free lunch. Clear? That was one property of the production set we discussed. कि without utilization of input it is not possible to produce certain level of output. Clear? Technically it is not possible.
So in economics, there is no free lunch. Clear? You have to pay something, either physically or monetary. Second important property we discussed that non-empty set. Clear? What does it mean, the non-empty set? That without any input or output, production plan is useless to discuss. Either you will have input or you will have output. Clear? And because output cannot be produced by utilizing input, because of the first property was no free lunch, so that's why you should have at least certain level of input. That is the property of the non-empty set. Clear? Just recall it. What does it mean? Non-empty set, I told you that for example, y2 equal to 0 and y1 less than 0. Here, non-empty. Am I right? Y1 is input, clear, which is less than 0, negative, and you have nothing you are producing here. Y2 is 0. So it is non-empty set. But if I write this one, for example, यानी this set I cannot write produce here. मैं यहाँ नहीं कर सकता था. How? What does it mean? Y2 greater than 0 and Y1 is 0. So technically it is not empty set. Why? It is not going to satisfy the property of the no free lunch. क्या हो रहा है? Y2 positive है. You are producing something without utilizing of input. So non-empty set I cannot represent in this way. मैं ऐसे नहीं जाहिर कर सकता था. Clear? So how I can represent the non-empty set? Non-empty set I can represent in this way. Y2 equal to 0 and Y1 less than 0. So it is not non-empty set. This is non-empty set. That was one property which we discussed in previous lecture. Clear? So that is the difference between how you can represent non-empty set. You cannot represent in this way. You can represent along the x-axis instead of the y-axis. Why? In case of the y-axis, it means you are not utilizing any input or producing certain level of output. ऐसा ही है कि कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और इनपुट कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी द फर्स्ट प्रॉपर्टी नो फ्री लंच डज नॉट सेटिस्फाई हियर, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. क्लियर? सो अब नाउ दैट वाज वन प्रॉपर्टी. जस्ट रिकॉल अनदर प्रॉपर्टी वाज दैट के इररिवर्सिबिलिटी मींस के इट इज नॉट पॉसिबल कि इफ यू हैव एग्जॉस्ट ऑल द इनपुट्स mentally, physically and whatever, so they cannot be convert reverse back its original position. So irreversibility is here in case of the production set. It is not possible. Clear? That was another property. Now the next property was we discussed that for example, non-increasing returns to scale, non-decreasing returns to scale or constant returns to scale. Depends on the scale value that is represented by alpha. Clear? If the value of alpha greater than equal to 1, so it is the case of the non-decreasing returns to scale. Clear? Non-decreasing returns to scale means either you will have the constant returns to scale or increasing returns to scale. That's why you hold the property of the non-decreasing returns to scale. Clear? And we discuss in case of the non-decreasing returns to scale, what should be the shape of the production set? We discuss here. Now, second property we discuss non-increasing returns to scale. In this condition, you have to scale
the value of alpha, sorry, value of labor and capital in case of alpha greater than 0, less than equal to 1. Clear? Value of alpha should be greater than 0, but less than equal to 1. Clear? Either it is constant returns to scale or less than constant returns to scale. Clear? That was the case of non-increasing returns to scale. When this property is satisfied, we discussed that the shape of the production set should be non-convex in this shape. Clear? Now the constant returns to scale, in case of the constant returns to scale, we discussed that how you will scale the value of alpha, labor and capital. In case of value of alpha, the value of alpha should be equal to greater than equal to 0 या तो 0 होगी or it will be greater than 0. It may be greater than 1, it may be greater than 2, it may be less than 1, whatever the value, depends on you. Clear? It is constant returns to scale. In case of the constant returns to scale, the production plan should be like a straight line. Clear? Convex and straight line. Clear? So that was the case of the constant returns to scale. Similarly, we discuss these returns to scale with respect to the fixed cost. Clear? कि when you will satisfy in case of the fixed cost, so in case of the fixed cost, both properties are going to satisfy. सारी properties satisfy हो रही हैं. Second, then we move towards the convexity. कि what is the convexity? Convexity hold when you will have two production plan. So if you will use a linear combination of these two production plan, it should belongs to that production set. So it means that convexity is proved there. Clear? So these property we have discussed. Now we are moving towards the production function and marginal rate of technical substitution. Clear? Okay. Okay. Now the production function. There are some important assumptions of the production functions, axioms or assumptions. Assumptions of function. Number one, production function is continuous quasi-concave
strictly quasi concave. Strictly quasi concave and f0 equal to 0. What does it mean? Strictly quasi concave or f0 equal to 0 or continuity. Continuity, we have discussed that it is our mathematical requirement to satisfy the concept of derivative or differentiation. Clear? Or if you have a discontinuous function, so in case of the discontinuous function, there is the possibility that you will have a empty set or you will have a null set. Clear? So that's why you have to assume any function by nature, clear, should be continuous. क्लियर? तो आप देखो जब भी कोई डेटा सेट उठाते हो, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी मार्केट का, तो दैट इज योर अजम्पशंस कि इफ योर हैव द डिसकंटिन्यूटी इन द डेटा सेट, तो यू मे हैव टू फेस अ some kind of the problem to analyze your results or to run your results on any software. Clear? So you have to utilize या you have to get a continuous data series जिसके अंदर कोई discontinuity exist ना कर रही हो. Clear? तो normally whenever you have a research target, तो first important target you have ultimately कि you have to check either the available data is available or not. What is your objective? Related to that objective, your information or the data set should be available and it is published by proper any government resource or any authentic resource उससे published हो रहा हो. ठीक है? So in case of the primary data set, it is difficult because you have to take a survey and something else, और उसमें वर्क ज्यादा होता है, डिफिकल्टी ज्यादा होती है, तो डिपेंड्स. फॉर एग्जांपल, तो इन दैट कंडीशन यू रिक्वायर्ड अ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा इज इजीएस्ट वे टू हैंडल. ठीक है? एंड बट इट शुड बी कंटिन्यूसली पब्लिश्ड. ठीक है? वो आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए. सेकंड, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी हैव अ कंटिन्यूस डेटा, यानी तो देयर इज द assumptions दैट आवर फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होना चाहिए. क्लियर? सो कंटिन्यूटी इज मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट एंड नाउ इट इज द स्ट्रिक्टली quasi concave and f equal to 0. We have a detailed discussion related to the quasi concave function. सही है? I have already recorded lecture related to the quasi concave. If you want to वॉच तो आप वहां से देख सकते हो. इट इज लिटिल बिट टेक्निकल डिबेट रिलेटेड टू द व्हाई यू अज्यूम द cosine concave फंक्शन. तो वी आर नॉट फोकसिंग हियर, वी आर जस्ट एक्सप्लेन के व्हाई यू आर अज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ अजम्पशन. मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा. ठीक है? क्लियर? तो वो आप बाद में जब अगर पीएचडी करो तो वहां डिस्कस देख लेना. क्लियर? तो नाउ व्हाई वी अज्यूम के द फंक्शन शुड बी cosine concave. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, cosine concave function, cosine concave function is weaker condition for optimization as compared to concave. ठीक है? That is very confusing कि why you are not assume कि function should be concave. ठीक है? हम क्यों concave नहीं ले रहे हैं? Now the cosine concave function, try to understand this condition. What is the meaning of the cosine concave function? Is weaker condition
for optimization as compared to the concave function. Quasi concave function will be like in this way. Or this one, sorry, this way. What does it mean? Look at this function and as compare this one. This is a strictly concave function. Clear? And in that function has increasing returns to scale, constant returns to scale, decreasing returns to scale. So all the aspect of returns to scale covered in this function. That's why I'm saying it is a weaker condition as compared to concave condition. Concave function cover only decreasing returns to scale. Its returns continuously decreasing. It is pre-rec or initial condition that your returns to scale, yani sufficient condition is that your rate of change should be decreasing. In case of maxima, अगर रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीजिंग नहीं होगा तो यू नेवर अचीव अ मैक्सिमा. देख लो इसमें इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. दिस फंक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, ऐसे ही है, एंड दिस फंक्शन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट. सो इन दिस कंडीशन यू नेवर अचीव अ मैक्सिमा. सो रेट ऑफ रिटर्न्स ऑलवेज डिक्रीजिंग, otherwise you cannot achieve a maxima. So we assume that production function should increase with decreasing rate in case of maxima. So now, but it is possible that in production, any production stage, initially you may have a increasing returns to scale, you may have a constant returns to scale, or you may have a decreasing returns to scale. So this quasi concave function covers all aspect of returns to scale. It covers only increasing returns to scale. It covers only decreasing returns to scale. So that's why I'm saying that quasi concave function is weaker condition for optimization as compared to concave function. समझ में आ गई बात? देखो भाई, आपके पास कोई भी काम आप करने जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास इनिशियल से आपके पास एक साइकोलॉजिकल रैशनल अजम्पशन क्या होता है. रैशनल अजम्पशन ये होता है कि नाउ इनिशियली यू अज्यूम दैट कि मुझे रिटर्न्स टू स्केल जो है ना इंक्रीजिंग मिल रहा हो. ठीक है, इफ यू विल हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्लियर, देन यू विल हैव मे बी द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब अगर फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं, लेट्स से अगर मैं कहता हूं नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस, क्लियर, दिस इज माय लेबर और इनपुट्स ले लेते हैं, ओके, एंड दिस इज माय रेवेन्यू. बहुत बेसिक सा बता रहा हूं. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज के माय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इनपुट्स, my sales revenue may be possible initially in this way. Possible है कि in the day starting days my sales revenue will be like this one. Okay, अब now again it's decline or it may have this one or you, कोई भी शेप हो सकता है. क्लियर? सो अब आप मुझे बताओ कि if you have to optimize this sales graph, what should be your assumption mathematically? भाई आपसे मैं कहता हूं, आप किसी भी स्टॉक का, किसी भी चीज का आप डेटा उठाओ और उसको प्लॉट करो तो स्पाइक्स नजर आ रहे होंगे ना डेटा के अंदर. ठीक है, नाउ रिसेंटली यू हैव द एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंप्लीटली डिक्लेयर
कि नाउ वी कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर 1 वीक के लिए भी हम फिक्स नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिसाइड. वाई? कंटिन्यूस वॉलेटिलिटी इन द डेटा. ऐसे ही है, जो मार्केट प्राइस होंगे वही ड्रॉप करने पड़ेंगे. वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि नाउ वी कैन नॉट बेयर एनी काइंड ऑफ द रिस्क. जो मार्केट डिसाइड करेगी आइदर $92 पर बैरल एंड वॉट एवर, या 114 या 150 जो भी होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट प्राइस इन द मार्केट. क्लियर? तो कल अनाउंस हुआ है कि इट इज ओनली फॉर 2 days, कि फॉर 2 days इट विल बी अराउंड 335 समथिंग रुपीज, जो गवर्नमेंट ने कल न्यूज पे अनाउंस किया है. ओनली फॉर 2 days. इट मीन्स कि देयर इज कंटिन्यूस वॉलेटिलिटी इन द डेटा सेट. अब आप मुझे एक बात बताओ, वी यूज डिफरेंट रिग्रेशन एनालिसिस और सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल वॉर और वॉर वेक्टर ऑटो रेग्रेसिव. So these techniques are used to forecast your future values. When you will have the continuous volatility, so your forecasting is not appropriate as per your desire. Clear? जरूरी नहीं है आपके रिजल्ट्स इतने रिलायबल हों. अब क्या होगा, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे आपके. क्लियर? ऐसे ही होता है. ठीक. अच्छा, अब हम ऑप्टिमाइजेशन अगर हमें करनी है तो अब हम क्या करेंगे भाई? बिल्कुल. बिल्कुल. अच्छा, अब लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये आपने एक टेक्निक मुझे बताई, ग्राफ्स का फ्लक्चुएशन किस तरफ आ रही होगी, रिटर्न्स कहां आ रहा होगा? या तो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा होगा डिक्रीजिंग रेट के साथ, यही पॉसिबिलिटी है ना. इफ यू आर मिनिमाइजिंग योर रिस्क, क्लियर, तो इट मींस के यू ऑलवेज मिनिमाइज योर रिस्क इन दिस रीजन. हमेशा ऐसे रीजन में कहीं जो भी आपका ग्राफ आ रहा होगा, तो मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं कि नाउ इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट. ऐसे ही होगा. लेकिन देखो, कभी भी ऑप्टिमाइजेशन में मुझे, लेट्स से, कीप इन योर माइंड, मुझे एक सिंगल यूनिक सोल्यूशन चाहिए. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ग्राफ कंटिन्यूसली इस तरह मूव कर रहा है, ये लेट्स से अज्यूम कर रहा है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, मुझे बताओ कहां से मैं ऑप्टिमाइज करूंगा इसको? पॉसिबिलिटी नहीं है. मुझे कोई ना कोई अजम्पशन लेना पड़ेगा कि व्हेन इट विल स्टार्ट डिक्लाइन, जहां पे ये मेरा डिक्लाइन कर रहा है. अब हम करते क्या है नॉर्मली, अब जैसे अभी आपने गोल्ड इसकी बात करी, ऑयल प्राइसेस का डेटा अब मैं, मेरे लिए यूजलेस है कि मैं उसको मंथली डेटा के ऊपर काम करूं या बाय एनुअल डेटा के ऊपर काम करूं. अब मुझे उसको वीकली डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपने रिजल्ट्स को मोर सिग्निफिकेंट और अप्रोप्रिएट बना लूं, क्योंकि इतने स्पाइक्स आ रहे हैं डेटा के अंदर. ठीक है. इसके कंपैरेटिवली लेट्स से अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड का डेटा उठाता हूं, डिपेंड करता है, उसके अंदर एक मुझे ट्रेंड नजर आ रहा होगा, यार मुझे पूरे मंथ के अंदर या पूरे साल के अंदर इसने मिनिमम जो है 30% रिटर्न दिया है, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 35 पे गया था, इसके ब्रैकेट के अंदर लाई कर रहा है. मैं वहां पे कोई एक ऑप्टिमम सोल्यूशन देख लूंगा कि यार शुड आई बाय और नॉट. ठीक है, मेरा एक ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा. मुझे एक लोअर एंड अपर ब्रैकेट बाउंड पता है. अब लेकिन जब मुझे कोई लोअर एंड अपर ब्रैकेट बाउंड पता ही नहीं हो, फिर मैं क्या करूंगा? तो इसका मतलब है मैं ब्रेक्स करूंगा डेटा को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, ताकि मैं बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन लूंगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन के ऊपर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा. हाँ.
मुश्किल काम है, ठीक है ना। इसी हाँ बिल्कुल करेगा। लेकिन देखो, मुझे एक बात बताओ, किसी भी किस्म की ऑप्टिमाइजेशन में जा रहे हो, मेरा आर्ग्यूमेंट यहां ये है, ठीक है, आपका ऑप्टिमाइज हमेशा तब होगा जब आपका रिटर्न्स जो है ना वो डिक्लाइन, रेट ऑफ रिटर्न्स डिक्लाइन करने पे जा रहा होगा, है ना। ये इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जब तक मेरा रिटर्न्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा, आई कैन नॉट ऑप्टिमाइज इन दैट रीजन, ठीक है। तो मेरा बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी हो, कितनी वॉलेटिलिटी हो, व्हाट टेक्निक यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, हेजिंग कर रहे हो मार्केट फंडामेंटल्स को, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे पास रिस्क कैलकुलेट करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाँ, लेकिन अगर इकोनॉमिक है, फैक्टर्स की वजह से वॉलेटिलिटी आ रही है, उसको मुश्किल है। लेकिन कोई भी फैक्टर्स आ रहा हो, तुम्हारे पास रिटर्न्स तब ऑप्टिमाइज कर रहे हो कि जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो जर्नली इसका मतलब ये है कि मेरा जब ये इस तरह का अप्स एंड डाउन आ रहा होगा, इसको मैथमेटिकल नेम मैंने कह दिया कि नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कोसाई कनकेव फंक्शन, जिसके अंदर ऑल द पॉसिबिलिटीज आर हियर, आइदर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट इट इज माय आर्ग्यूमेंट कि नाउ आई ऑलवेज ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज, ये टेक्निकल वर्ड, ऑप्टिमाइजेशन मींस के मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन डज नॉट मींस के यू ऑलवेज मैक्सिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन मींस के यू मे मिनिमाइज और यू में मैक्सिमाइज। रिस्क होगा मिनिमाइज करोगे, गेन होगा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे, रेशनैलिटी यही कह रही है। तो अब क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा कि इस तरह का कोई फंक्शन तुम्हारा मूव कर रहा होगा, तो यू विल ऑप्टिमाइज हियर व्हेन योर रेट ऑफ रिटर्न्स कंटिन्यूसली इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, वहां पे जाकर ऑप्टिमाइज करोगे, उसके अलावा नहीं करोगे। क्लियर? क्योंकि रुकोगे नहीं, तुम्हारा रेशनल बिहेवियर ये है कि भाई देखो, गुड है ना, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, गुड की डेफिनेशन क्या है, मोर इज बेटर देन लेस। तो रिटर्न्स भी यही है, मोर इज बेटर देन लेस, जितना ज्यादा मिल रहा होगा उतना ज्यादा है, वहां तो आपके पास डिसयूटिलिटी रिटर्न्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, वो कोई टेंजिबल कमोडिटी तो है नहीं, वहां तो जितना उसके अंदर मनी यूटिलिटी क्या है, ऑलवेज डिमिनिश करती नहीं है यूटिलिटी ऑफ मनी फंक्शन की, वो क्या हो रही होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही होती है इंक्रीजिंग रेट, राइट। तो अब कब करोगे, जब आपके पास ये आ रहा होगा पॉसिबिलिटी। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक तो ये कंडीशन हो गई कि इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, either the production functions represent to the services sector, represent to the commodity producing sector, any kind of the sectors, it should be quasi concave. Why quasi concave? Covers all the aspects. This is our argument here. Second condition is that कि this is one argument to utilize the quasi concave. Second one, in case of quasi concave function, when we utilize one input the production
Okay. Production return start decline. In case of quasi-concave function, when we utilize one input in more quantity, the production returns start decline. Why? Every input has diminishing marginal productivity. And now this one, F0. What does it means? When we have zero input, output is also zero. So no free lunch. No free lunch. Now the similarly, inaction is possible. Inaction or shutdown is possible in production. So now you can check it कि how we are going to relate some important properties of the production chart with production function. So it means the production function is continuous, strictly quasi-concave, and you should hold the property of F0 equal to 0. Next, okay. Second one is F is differentiable. F is differentiable. That is, yes, Dawa Fx over Dawa Xi greater than 0. So it is differentiable function. Number of inputs. So now the marginal rate of technical substitution. Okay, Y M R T S labor and capital is diminish. Diminish. Okay.
This is your isocon. IQ. Isocon. Capital. Okay. Or we can write it FL upon FK. Right? So marginal rate of technical substitution. Ab now you have to prove that why the marginal rate of technical substitution is diminished. वो किस वक्त है सेमिनार? 11:30. ठीक है. So first of all we have some derivation related to the marginal rate of technical substitution. Okay. अच्छा, I know that FL is a function of labor and capital. Clear? Marginal product of labor. This is called MPL. Am I right? So I can write that MPL, marginal product of labor, is a function of labor and capital itself. Clear? And similarly, FK, this is the function of labor and capital, which is called MPK. Okay. Technically, it is negative. Due to marginal productivity of labor and capital. Clear? So in the short run, we assume that marginal productivity of labor diminish. Clear? And similarly, marginal productivity of capital diminish. ठीक है? So in short run, marginal product of labor decreases. It's negative
In short run, marginal product of capital decreases. Right? Okay. Achha, what about this one? If I write FLK, this is called cross effect between labor and capital. Right? If I say कि cross effect is greater than zero, what does it means? Labor increases, capital increases. Right? Demand for labor increases, demand for capital increases. Clear? So cross effects are positive. Okay. And if cross effect are negative, so labor increases, capital decreases, and vice versa. So cross effect are positive. Negative. Clear? So now one important property, FLK is equal to FKL. What does it mean? Cross effects are symmetric. What does it mean symmetric? यानी change in labor with respect, यानी change in marginal product of labor with respect to capital, it is just equal to change in marginal product of capital with respect to labor, are equal to each other. क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये है, मैं बता, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, डावा एम पी एल with respect to change in, सही है, के, राइट? क्या मतलब हुआ? चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन कैपिटल इज जस्ट इक्वल टू change in marginal product of capital due to change in labor. One important property is own substitution effect. Own substitution effect is always negative. What does it mean? FLL, FKK, always negative in short run.
तो आई थिंक इसको यहां तक रखते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी डेरिवेशन है. क्लियर? सो इज देयर एनी क्वेश्चंस? यस. FLK which is less than 0. Yes. मैं ये कह रहा हूं कि इफ लेबर इंक्रीजेस कैपिटल डिक्रीजेस. क्लियर? और वाइस वर्सा. Greater than 0, labor increases, demand of capital also increases. So cross effects are positive, cross effect are negative. So there are the two possibilities in case of the cross effect. ठीक है? यानी either I adopt that technology कि when I increase labor, तो simultaneously I have to increase capital. So it means कि cross effect are positive, or sometime I substitute labor with capital or vice versa capital with labor. So in this condition cross effect are negative. So normally when we move towards the capital intensive technology, the cross effect will be negative, or when either you will move towards the labor intensive technology, again the cross effect will be negative. ठीक है? क्योंकि you substitute one factor of production with respect to another one. Clear? So sir, that is from my side. अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा. ठीक है? Thank you so much. Inshallah we will meet on coming Sunday. ठीक है? टाइमिंग यही रहेगी. ठीक? अल्लाह हाफिज.